record gives 3,800. And the reason is obvious. Police हमेशा अपने figures जेडे घट दसदी है, वरना उन्हां दी हाज़री हो जाती है कि why did you let this happen? और हले अंग्रेज वर रूलिंग इंडिया ना, और मेरी अपनी रिसर्च है, and I use this common argument. The affected group will always exaggerate its numbers. Those who are culprits will like to hide it, and the police and administration would give a smaller number just to absolve themselves of not having acted. So the truth could be anywhere between 5 to 7,006 killed, of which maybe several hundred were also Hindus. लेकिन मेन प्रॉपर्टी सारा कुछ रावलपिंडी शहर सिखा दी है सी, बल्कि जड़ा है ना की ना सी सोहन सिंह मोहन सिंह, उन्हों की जी बड़ी बिल्डिंग है, इट लेटर ऑन बिकेम द रेजिडेंस ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. आई मेट मुशर्रफ फॉर माई गैरिजन स्टेट बुक वाइल ही वॉज देयर. मैं क्या है तो घर तुहानू पता सरदारां दा है, दे ऑल नो दैट ऑफ कोर्स है, उन्हां दी प्रॉपर्टीज ने वास्ट houses and so on and so forth. Anyhow, so the question is, sir and ladies, how can the state not do anything about it? क्योंकि सारे पिंड जिहड़े ने 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रकां 'च तुसीं भेजो फौज या जो, ते you can bring them under control. For 7 days nobody came to help these people in distress. They came on the morning of the 13th. और फिर उन्होंने जिहड़े लोग बचाए सन, ये भी उन्होंने स्टोरीज मेरी किताब में है, जिन्हां कोलों मैं एविडेंस भी लिया. Thereafter, I would say there was no return of the Punjab. अलबत्ता जिन्ना साहब ने 46 तो शुरू करता सी सिखां नूं कहना, उस तो पहले कहते सन 2 नेशन, the others are national groups. उन्होंने कहा असीं मान लैंदे हां कि सिख भी जिहड़े ना वो एक नेशन ने, लेकिन यह दसो कि तुसीं ये सिख स्टेट बनानी है तो कित्थे बनाओ. And that was a very sharp argument, because if you are claiming areas, you can only claim them on the basis of your population. And the Sikhs were unfortunately not in a majority anywhere, not even in the princely states. You get the point? So, जेड़ा आइडिया है सी ना कि चलो थर्ड नेशन बना के इन्हां नूं एक सैपरेट स्टेट दे दिओ, इट डिड नॉट इंक्लूड पटियाला ते उहदे च आ जांदा है, कपूरथला आ जांदा है, यह आ जांदा है, लेकिन जलंधर लुधियाना और जिहड़े इंग्लिश इलाके सन, दे वुड स्टिल रिमेन इन पाकिस्तान. सो दैट वाज उन्हां दे सिख लीडर्स नाल गल करदे. फाइनली the final meeting was on the 15th and 16th of May 1947, sponsored by Mountbatten. उन्हें अरेंज कराई, जिहदे इधरों जिन्ना साहब और लियाकत अली खान विद एक दी भैन दूसरे दी बीवी, they were there. महाराजा पटियाला was there. हरदीत सिंह मलिक, a pilot, Sikh pilot who had distinguished himself during the Second World War, was there. I think Yani Kardar Singh was there, Baldev Singh was there, and possibly Tara Singh, and all these were there. उत्थे जिन्ना साहब ने फिर एक फाइनल कोशिश की थी सिखां नूं मिलान दी, और क्या कि देखो हाँ जदों ये मैसेकर होए ना सिखां दा वन साइडेड इन रावलपिंडी, ना जिन्ना ने, ना लियाकत अली खान ने, ना पंजाब के जिहड़े मुस्लिम लीग के प्रेजिडेंट सन Nawab Mamdod, or any other Muslim leader issued any condemnation of what has happened or any sympathy for the victims. None of them went there to express their solidarity. So there is a complete silence from the Muslim League. Now on the 15th and 16th, Jinnah told them कि देखो ज़लूल पाशा सी इजिप्ट का लीडर, उन्हें जड़े इत्थे सन ना इजिप्ट के क्रिश्चियंस, कॉप्टिक क्रिश्चियंस,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇ ਵਰ 10% ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ you can write down whatever guarantees you want, but you have to agree that India should be partitioned to create Pakistan. Within that framework, then we can grant you, और वही ख्याल से कि princely states के करीब होएगा, not the other districts. ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। But Hardeep Singh Malik was the Sikh spokesman who was talking on behalf of the Sikhs. वो कहते कि the Muslim leader was offering us everything, but we had decided not to join Pakistan. And the reason was the March experience was already there. So Muslim League the credibility zero हो चुकी हुई सी, and then of course हिस्टोरिकल मैमरी जी वो फिर साहबजादियां नाल जो होया ये वो भी कोई लिविंग मैमरी है ना, इट इज़ रिपीटेड एवरी डे अमंग सिक्स। सो दो चीज़ां हो गया एंड सो ही सेज आई हैड अ फ्लैश इन माई माइंड एंड आई सेड मिस्टर जिन्ना सर you are promising us everything, but what will happen when the day for implementing the promises arrives and God forbid you are not there? तो जिन्ना दी उत्थे स्टेटमेंट है कि my friend in Pakistan my word would be like the word of God. लिहाजा जो मैं इत्थे प्रॉमिस कर रहा वो ही होगा। और फिर हरदीप सिंह मलिक नोट्स कि we realized that Mr. Jinnah was completely out of touch about what was happening in Punjab. So okay, then we withdrew. So there is one point where Mountbatten facilitated कि सिखां दी और मुस्लिम लीग दी कोई हो जाए ताकि पंजाब किसी तरीके नाल यूनाइटेड रहे, and that would have been in Pakistan, but वो नहीं हो सके। और उसके बाद मई के बाद फिर escalation of violence होती है और the violence then keeps on spiraling. 10 June Mountbatten announces the partition plan. The partition plan requires ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ कि India और Pakistan will be created as two dominions, but Punjab and Bengal assemblies will vote on whether they want Punjab to as a whole go to Pakistan or to India or be partitioned. Same with Bengal. So on the 21st, ਉਹਦੇ 'ਚ process ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਨ 12 districts were Hindu Sikh majority and 17 were Muslim majority. So these two blocks, ਇੱਕ ਵੀ block ਇਹਦਾ ਚੋ ਜੇ partition ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਵੇ ਤੇ the province will be partition. So it's the Hindu Sikh members of the assembly who voted to partition Punjab and be part of India, and the same in Bengal. The Muslim League wanted Pakistan through a partition of India, but wanted the whole of Punjab and Bengal without this principle being applied. वही मैं कह रहा 44 चाहे ऑफर भी सी कि भी प्लेबिसाइड करा लो जे लोग उत्थे नहीं चाहते तुहाडे मुल्क विच रहना, so they can be given their own sort of thing, because the principle is कि we fear domination of the majority. A Muslim fear it, but we have a majority here, so we want our say. In that majority area, you have Hindu Sikh majority in some parts. They should have the same right. But Jinnah Sahib was not prepared to do that in 44, and in 47, ultimately this is what happened. And ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ, I'll take another 10 minutes over. The British actually wanted कि cabinet mission plan ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ we don't want India to be pro-Soviet. Haji,
लिहाजा एक तो श्योर करो कि जो भी इत्थे होंदा है लेफ्टिस्ट इंडिया ना बने, क्योंकि साडी बहुत इन्वेस्टमेंट है इत्थे और दुनिया की पॉलिटिक्स इंडिया का सोवियत यूनियन जाना जिहड़ा है वो पावर इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। सो हैंस दिस वीक सेंटर, यानी कैबिनेट मिशन का वीक सेंटर बनाने का मतलब तो यही है ना कि सेंटर वुड बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट द प्रोविंसेस वांट, क्योंकि सारी फंडिंग तो उत्थों आनी है। तो जो प्रोविंसेस ही कोऑपरेट ना करन तो सेंटर इज पैरालाइज्ड। सो एक है, मगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੇ। 11th ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਸਰ ਕਲੌਡ ਔਕਨਲੈਕ, the supreme commander of India, he had to prepare a memorandum about whether there should be a Pakistan or not, and the memorandum which have pro and con, पाकिस्तान बनाने का फायदा है वे, नुकसान है वे, फायदा है वे, नुकसान है वे। बट ही कंक्लूड्स कि देखो हिंदुस्तान नू एक स्टेट जिहड़ी अपने आप नू डिफेंड करने लई सब तो वड्डी जिहड़ी कंट्रीब्यूशन है वो तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है। A partitioned India would mean the partition of the army, and that would mean a weaker India, divided India against external aggression. And for them the external aggression existed from 1833 when the game had started, and now through the Soviet Union. So no Pakistan, because if Pakistan is created and it is leaning towards us, India automatically will go towards the Soviet Union. So at 46 11th May, the supreme commander writes a note against Pakistan, but ਉਸ ਦੇ bottom ਤੇ ਉसी report ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ second in command, his name was Lord Wayne, W-A-Y-N-E. He says, I do not agree. So already within the army, keeping India united was not, let's say, acceptable to all. ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ आफ्टर माउंटबेटन had spoken to everyone, और उन्हें नेहरू और गांधी नेहरू और जिन्हों ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੂ ਵਾਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਟ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੋਥ ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਵਰ ਫੋਰਸਡ ਟੂ join the Commonwealth, but 12th May 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ the three heads of the British Armed Forces, the hero of the Second World War, Field Marshal Montgomery, Lord Ismay from the Colonial Office and others say that if partition now takes place, we should demand from Pakistan access to Karachi port facilities, Pakistan airfields and Muslim manpower. Whereas Jinnah has showed an interest in joining the Commonwealth, Hindustan may go its own way, because Jawaharlal Nehru and the people around him, the left and so on, were not willing to toe the line of the British. They wanted to assert that really baat is down the line movement the leadership bhi bani, theek hai? So that's the turn now in the British military finally in favor of Pakistan. Or then Mountbatten goes to the UK and compels the British government ke let's not wait till June 1948, both are now in the Commonwealth, cheti cheti power transfer karo aur niklo, agle saal shayad inna da koi samjhota na ho jaye। I mean, this is where I try to interpret him on a likhya nahi hai, but he convinces them कि instead of waiting till June 1948, we transfer power in mid-August 1947. और पंजाब गवर्नर सर एवन जेंकिंस was writing कि जे पार्टीशन होती है पंजाब की तो इतने तो ब्लड शेड होएगा, ब्लड बाथ होएगा, unless all three communities agree to it। और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पंजाब
ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਆਏ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਜਨ ਉਹ ਆਏ। According to the terms of reference, now when the assembly had voted, contiguous Muslim, non-Muslim areas had to be separated. Muslim areas to Pakistan, Hindu Sikh areas to India. Okay? But other factors will also be taken into account. This was the terms of reference on which the partition was to be, demarcation of the border boundaries between India and Pakistan were to be determined.